So we're not gonna wait for everyone to join. Start कर लेते हैं and people can join as they get here. ठीक है. तो there's a couple of things जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे. One is classes and structures के बीच में क्या difference है. I know you guys have done structures in your lab already. तो उसका कोई इतनी डेप्थ में हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे. तो you guys have done this already के structures के अंदर you can make functions in C++, but when you have classes के पास भी functions होते हैं and structures के पास भी होते हैं, variables दोनों के पास होते हैं. तो like what is the difference between both of them? तो हमें वो देखना है. So since you guys have done structures in your lab, तो लैब के अंदर आप लोगों ने फंक्शंस बना के उन फंक्शंस को कॉल करके देखा था. यू कैन जस्ट कमेंट योर आंसर्स. Okay, so you did try, right? Okay, so हम अब बेसिकली एक और चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि how are structures and classes different? क्योंकि दोनों चीज़ों के अंदर we can like make objects या variables बोल लें, we can have member variables, we can make functions call भी कर सकते हैं. तो differences जब हमारे आते हैं, that's more in कि whether you want a member variable to be public or not, या do you want it to be private या protected रखना चाह रहे हैं. तो उस तरह की कोई distinction नहीं है when you're using structures. तो everything is public, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, बट वी डोंट ऑलवेज वांट दैट. हम चाहते हैं कि देयर शुड बी सम एक्सेस कंट्रोल. तो हम मॉडिफायर्स के लिए क्लासेस को प्रेफर करते हैं. सेकेंडली, जब आप इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे होते हो तो पहले नहीं होता था लाइक, बट इवेंचुअली लैंग्वेजेस भी इवॉल्व करती हैं. तो स्ट्रक्चर्स के बीच में पहले इनहेरिटेंस नहीं हो सकती थी, बट नाउ स्ट्रक्चर्स आपस में इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं. So similar to classes can inherit from each other. But एक क्लास एक स्ट्रक्चर से इनहेरिट नहीं कर सकती. सिमिलरली कोई स्ट्रक्चर किसी क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकता. तो लाइक आपस में इंटरैक्शन नहीं है कोई क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स के बीच में. लास्टली मेमोरी में किस तरह से स्टोर हो रही होती हैं चीज़ें. तो when we talk about variables, so this is something you guys have done already. Like पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी variables आप create कर रहे होते हो तो variables आपके stack पर store हो रहे होते हैं. So अगर मैं कोई integer declare करती हूँ, I write integer a, तो उसके लिए memory जो allocate हो रही होगी that would be on the stack, किसी और चीज़ पर नहीं हो रही होगी. Similarly अगर मैं एक integer के कोई array बनाना चाह रही हूँ, so if I write कि मुझे 10 elements की एक array बनानी है integer के लिए, तो if I do something like, actually वो screen नहीं share होगी, so let me share my compiler वाली screen. So I'm doing this on the compiler, online compiler. It's not letting me select my, चलिए मैं screen share कर देती हूँ. Okay, so let's have a look over here. अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दें कि मुझे एक integer a declare करना है, this is being done on the stack.
if I write something like this कि मुझे एक integer के लिए array create करनी है of let's say 15 elements, this is also being stored on the stack. तो as long as your compiler knows कि कितनी like memory allocate करनी है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ stack पर store हो रही होगी. But अगर let's say मुझे dynamically कुछ allocate करना है, तो if I have let's say a pointer and इसके लिए मुझे let's say कोई specific amount store करनी है, so let's say I not store allocate करनी है, so I say okay new array of let's say 20 elements मुझे declare करनी है, something like this. तो now this does not get stored on the stack. तो जब भी आप कोई dynamic memory allocate कर रहे हो, that will not be on the stack, वो आपकी heap पर store हो रही होगी. Similarly, अच्छा, so just not that, but जब भी आप objects declare कर रहे होते हो, so if I have a class over here, so I'm gonna write the class over here. So let's say class A, and let's say इसके अंदर एक variable है A. It's okay, we're not gonna use it, but let's just keep that way. Okay, so अगर मैं class A का कोई object create करना चाहूँ, so let's say I write A object, say, तो this does not get stored on the stack. ये भी heap पर create हो रहा होता है. But अगर मैं किसी structure का object create करना चाह रही होंगी, तो that will be made on the stack. तो structure को वो as normal variables like ट्रीट कर रहा होता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल जो मेरा इंटीजर है, तो एक स्ट्रक्चर को वो इंटीजर के तरह ही ट्रीट कर रहा होगा. बट इफ़ आई हैव अ क्लास, तो क्लास को वो एज अ स्ट्रक्चर नहीं ट्रीट कर रहा, एज अ वेरिएबल नहीं ट्रीट कर रहा. सो दैट्स व्हाई हमारे पास टर्मिनोलॉजीज में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं. सो जब भी हम क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वी से ऑब्जेक्ट्स उसके क्रिएट हो रहे होते हैं, एंड व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स या वेरिएबल्स, तो वी से कि उनके क्या क्रिएट हो रहे होते हैं. You can type your answer. I can look. So variables बोल रहे होते हैं, right? You're not typing it. I don't even know कौन है कौन नहीं है. Right. So whenever we make objects, तो उनको हम objects कह रहे हैं. Classes के लिए objects, structs के लिए variables, your normal data types उनके लिए भी whenever you're making variables, तो उनको हम variables बोल रहे होते हैं. Right. तो any questions so far? उनको हम cater कर लेते हैं before we move on to constructors. So I don't think कि you guys can unmute yourselves, or can you? अगर पूछना है तो hand raise कर लें या type कर दें. And if you don't have any questions, so you can. So do you want to ask something? Yeah, it's. Okay, so the hand raise is for question answers, right? So do that once more. Not the thumbs up, not the thumbs up. Okay, so I'm gonna assume, okay, Ryan, I'm gonna unmute you. Okay, wait, I can't unmute you, so you would have to unmute yourself and then ask the question. Let me have a look at the settings, just. Yeah, you guys can turn on your microphone yourself. So अगर कोई question है तो on करके पूछ लें. So I'm assuming you don't. So let's continue with constructors now.
Wait, somebody unmuted themselves. Okay, so let's talk about constructors. So हमने getters and setters देखे. Why were we using getters and setters? ताकि हम values like assign कर पाएं या change कर पाएं for different variables inside of a class. But अगर हम code पर आ जाते हैं तो over here I have a class A, उसके अंदर मैंने एक integer A create किया हुआ है. So अगर let's make a getter and a setter for this ताकि हम देख सकें कि what happens. So public, let's make a getter. So int get A, ये हमें return कर रहा होगा A की value. Similarly हमारा setter, okay, so you'll notice मैंने this का keyword use किया हुआ है over here. So I'll talk about this in a sec. But let's first see कि अगर हम A का object create कर रहे हैं तो what impact would that have on जो कि small a हमारा variable है उसके ऊपर. So what do you think would happen अगर हम a की value को print करवाना चाहें? So just type your comment कि हमारे पास output क्या आ रहा होगा. So if I print object dot get a, what will that result in? I need answers. हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा होगा? Will it be 0 या will it be something else? Yeah, it should be garbage value. So let's run that. देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है. Okay, I think I missed something. Yeah, मैंने class close नहीं की तो इसको हम close कर लेते हैं. Yeah. This should. Okay, sorry. No, wait. This is fine. This a equals to a. Okay, let me just see कि ये मसला क्यों कर रहा है. Okay, well ये 0 print कर रहा है, but if I did that on my compiler, this would not result in a 0. कि क्योंकि वो actually में कोई dynamic value नहीं assign कर रहा होता, वो 0 को assign नहीं कर रहा होता, वो कुछ भी assign नहीं कर रहा होता, तो जो भी garbage value पड़ी हुई होती है वो show हो रही होती है. तो I'll actually show you some screenshots जो कि मैंने अपने ही compiler से लिए थे. तो so over here show details का एक function create किया हुआ है मैंने. यहाँ पर getter and setter के थ्रू मैंने values नहीं set करवाई. So if I have a bank account class, उसके अंदर मैंने एक balance का variable बनाया हुआ है, एक interest rate का variable बनाया हुआ है, and if I just print those details, तो वो मुझे garbage value show करवा रहा होगा. It's not something जो कि उसने set की होगी. So it's an online compiler. Obviously कुछ चीज़ें वो probably सही नहीं कर रहा होगा. तो let's have a look कि जब object create हो रहा होता है तो how do we set the values at that time? तो there's different types of constructors जो कि आपके exist करते हैं. So first one is the default constructor. तो it's a constructor जो कि कोई arguments accept नहीं कर रहा होता. Constructor दिखता कैसा है? So it's like a function, but it does not have a return type. And वो class का name share कर रहा होता है. तो let me show you कि किस तरह का दिख रहा होता है. So actually it will be easier if I highlight it.
तो अगर मुझे बैंक अकाउंट के लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो अच्छा, इसके रूल्स मैंने आगे मेंशन किए हुए होंगे स्लाइड्स में, इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड लुक एट दैट, स्लाइड्स अपलोडेड हैं। बट लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। सो अगर मुझे बैंक अकाउंट के लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो दैट कंस्ट्रक्टर would share the same name as the class, so bank account, and अगर default constructor है तो वो कोई parameters नहीं accept कर रहा होगा, there is gonna be no return type, एंड इसके अंदर हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करवा देंगे। सो इंस्टेड ऑफ गार्बेज वैल्यूज़ मैं चाहती हूँ कि वो 0.01 स्टोर कर रहा हो, तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया। तो अगर हम अपनी ए वाली क्लास को मॉडिफाई करें टू मेक अ कंस्ट्रक्टर, तो द कंस्ट्रक्टर वुड बी कॉल्ड ए एज वेल, एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो आई कैन लीव द ब्रैकेट्स एम्प्टी, एंड देन मैं उससे कुछ बता सकती हूँ कि ए के अंदर मुझे क्या वैल्यू साइन करवानी है। सो लेट्स से मैं चाहती हूँ कि ए की वैल्यू 10 हो जब भी हम ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो नाउ व्हेन आई रन दिस मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल रही होगी ए की, जो कि हमने सेट किया है। तो अच्छा, सो ये चीज़ कब एग्जीक्यूट होती है? So your constructor, it's executed when this piece of the code runs. So जब मैंने लिखा है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ऑफ क्लास ए, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है उस टाइम पर आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। सिंस मैंने ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। सो वन मोर थिंग that I would like to talk about is कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे कंपाइलर्स खुद से प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर एनी क्लास। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर विल बी प्रोवाइडिंग, बट वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खाली होता है। सो लाइक इफ आई जस्ट रिमूव दिस, so that default constructor would look like this and वो कोई काम नहीं कर रहा होगा। So if you have any questions so far उनको you can ask me, and if you don't तो हम next part पर चले जाते हैं। So कुछ rules को discuss कर लेंगे। Okay, so let's talk about हमने default constructor देख लिया है किस तरह का दिख रहा होता है। Next part is your parameterized constructor. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है? इट्स जस्ट अ कंस्ट्रक्टर जो कि बिल्कुल इस तरह से ही दिख रहा होगा, बट वो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। उसको हम बाद में देख लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि हम इसको प्रॉपर्ली देख लें। ओके, सो ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेट्स मूव टू आवर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा, सो इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? सो आई मेड a constructor, so remember same rules apply, same name as your class, no return type, ideally आपके constructors public होते हैं। we'll have a look at के क्या होता है कि अगर मैं constructor को private कर दूँ। so in this case मुझे बैलेंस की वैल्यू सेट करवानी है, मुझे इंटरेस्ट की वैल्यू सेट करवानी है। तो मैंने दो पैरामीटर्स इसको पास कर दिए, नेम्ड बैलेंस एंड इंटरेस्ट रेट। तो अब इसके अंदर हमने जस्ट इनको असाइन कर दिया टू वट एवर पैरामीटर्स वर रिसीविंग। सो नॉर्मली आप कंस्ट्रक्टर्स के अंदर इसी तरह से काम कर रहे होगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा रहा होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो भी यूज़र ने वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं वो सेट करवा रहा होगा। तो विल हैव अ लुक एट कि मुझे अगर ये चीज़ें कॉल करनी है तो किस तरह से कॉल हो रही होंगी। तो लेट्स गो बैक टू आवर कंपाइलर। ओके, सो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बना लिया एंड हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल भी देख ली। सो आई राइट अ स्टेटमेंट ओवर हियर ताकि हम देख सकें कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है। ओके, सो
ओके राइट। सो अगर हम इसको रन करते हैं, सबसे पहले वो मुझे बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो गया एंड जो भी हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी थी वो उसने प्रिंट करवा दी है। So let me just okay. Now let's make a parameterized constructor. So इसके अंदर हमारी क्लास A के पास जस्ट एक ही वेरिएबल है, तो I'm just gonna say कि एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर लो, सॉरी एक वेरिएबल रिसीव कर लो और उसकी वैल्यू हमें सेट करवानी है A के अंदर। तो लेट्स से हमने A के अंदर उसकी वैल्यू सेट करवा दी। तो अगर मुझे ये कॉल करना है तो देयर इज मल्टीपल वेज टू कॉल योर अदर कंस्ट्रक्टर। तो लेट मी राइट दिस ताकि हम अगेन देख पाएँ कि वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके सो नाउ जब मैं ए ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ तो रिमेंबर हमारा फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो अगर मुझे सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है देयर इज मल्टीपल वेज टू डू दैट। तो फर्स्ट जो हमारा तरीका है हम लिखेंगे सो लेट्स से ऑब्जेक्ट 2 मुझे एक क्रिएट करना है। सो अच्छा, सो द फर्स्ट वे टू डू इट, मैं उसे बता दूं कि लेट्स से मुझे 13 इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है। सो आई एम जस्ट गोना यूज राउंड ब्रैकेट्स एंड जो भी मुझे आर्ग्यूमेंट्स पास करने वो मैंने स्पेसिफाई कर दिए। तो दिस विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए जिसके अंदर उसके ए वाले वेरिएबल की वैल्यू 13 होगी। तो दिस स्टेटमेंट is going to call this function at the time of object creation और वो ये वैल्यू इसके सेट करवा देगा। तो इस स्टेटमेंट को हम रिपीट कर लेते हैं एंड इसको ऑब्जेक्ट 2 कर देते हैं। तो नाउ हमारे पास सो फर्स्ट ये कॉल होगा, it should print default constructor, then ये कॉल होगा it should print parameterized constructor, then हम get a कर रहे हैं object 1 का, तो this should print 10 and this should print 13. So let's run that, right? तो सीक्वेंसली आपकी चीज़ें चल रही हैं, तो उसने लाइक जो भी वैल्यूज़ हमने सेट करवाई हैं वो उसने सेट कर दी हैं। सो अगर मुझे किसी और तरीके से कॉल करना है, सो आई सेड देयर वर मल्टीपल वेज टू डू इट, सो आई विल शो यू ओवर हियर एज वेल कि किस तरह से कॉल कर रहे होते हैं। राइट, सो फर्स्ट वे इज दिस वन जो कि हमने करके देख लिया। सेकेंड वन इज कि हम पॉइंटर के थ्रू डायनामिकली एलोकेट कर रहे हो या डायनामिकली भी ना कर रहे हो, इवन लाइक नॉर्मली अगर हम कर रहे हो तो उस तरह से भी कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो लेट्स से ए ऑब्जेक्ट 3, तो आई कैन डू द थिंग जो कि मैंने सेकेंड वाली डिक्लेरेशन में किया है, or I can do this a equals to a and let's say इसको हम 15 दे देते हैं वैल्यू। सो इस स्टेटमेंट में भी क्या हो रहा है कि आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो एक बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड उस ऑब्जेक्ट को वो असाइन कर रहा है टू ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। I should have just pasted that. Okay, so अब हमारे पास let's see कि क्या क्या काम कर रहा है। So again, first object create हुआ, second object create हुआ with a parameterized constructor, third object create हुआ, ये जो हमारे पास ये statement लिखी हुई है that is calling the parameterized constructor, ठीक है। and then यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो भी हमने वैल्यूज सेट करवाई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर वो प्रिंट करके दे रहा है।
अच्छा, so another thing that you can do is कि हम let's say I want to dynamically create an object. So एक pointer पहले बना लेते हैं. So I have a pointer जो कि एक A type के object को point कर सकता है. तो I can say एक new A का object मुझे चाहिए. So yeah, so this will call the default constructor. अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा लिखती हूँ and if I give it some value over here, let's say 16, so this will call, okay, I need to rename this variable. तो यहाँ पर अब वो क्या कर रहा होगा, default constructor नहीं call कर रहा होगा, parameterized constructor call कर रहा होगा. So based on जो हम arguments provide कर रहे हैं वो decide कर रहा होगा कि उसे कौन सा constructor call करना है. So let's run this. राइट, सो ये वाली जो दो उसने लाइंस ऐड करी हैं, सो वो हमारी यहाँ पर कॉल हो रही हैं. सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है. सो इफ़ आई वांट टू चेक कि उसने वैल्यूज सही एलोकेट की हैं या नहीं की हैं, तो आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस एंड हमें डॉट को चेंज करना होगा टू एन एरो. सो let me do that real quick. Okay, so I made some modifications. Pointer was the name of my pointer, तो मैंने pointer लिख दिया. And dot, so whenever you're working with pointers, so आप dot नहीं use कर सकते. You need to use the arrow operator to access the member variables या उसके member functions को access करना. तो this one should print 10 क्योंकि हमने default constructor call किया है, and this one should print 16 क्योंकि हमने इसके लिए एक specific value pass की थी. Right, so default and parameterized दोनों constructors call हुए हैं. So हमने different तरीके देख लिए कि किस तरह से आप एक object को declare कर सकते हो. Using a parameterized constructor, using a default constructor, या अगर new memory allocate कर रहे हैं to a pointer, तो वो सारी की सारी चीज़ें we have looked at. तो right, so any questions so far? Okay. So हमने एक वेरिएबल के साथ देख लिया कि किस तरह से we're making multiple constructors. We can have multiple, even more constructors अगर हमारे पास multiple variables हैं. So let's say I have int b over here. तो b की वैल्यू भी मुझे डिक्लेयर करनी है. So let's say मैं यहाँ पर एक इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने सेट करवा दी. Let's say now I can have इसके अंदर तो हमने नहीं कोई सेट करवाई. So let me make a getter and a setter for b ताकि हम उनको भी देख लें. Okay, so get and set बन गए हमारे b वाले वेरिएबल के लिए. So I don't have a constructor right now over here जो कि b की वैल्यू भी ये like यूजर से इनपुट लेकर सेट करवा रहा हो. तो I can make another parameterized constructor. Multiple हो सकते हैं आपके parameterized constructor. So let me make another parameterized constructor जो कि a and b दोनों की वैल्यूज को सेट करवा रहा हो. So I'll have two parameters in this constructor. Rules are the same.
सेम नेम एज द क्लास, नो रिटर्न टाइप्स, पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड कर दिए। तो इसके अंदर हम सेम चीज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर की थी। तो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दैट। एंड यहाँ पर हमने कहा कि ओके बी को हमें इक्वल रखना है टू अंडरस्कोर बी, जो कि मेरे पास दूसरा आर्ग्यूमेंट और है। तो इतने सारों के ऊपर हम काम नहीं करते, so let's just work with two variables over here and so instead of 13 अगर मुझे दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो I'll say okay 13 and 16 या 13 and 15 मैंने टाइप कर दिया। So I want to have call my other constructor, not the first one, and अगर मुझे फर्स्ट वाला कॉल करना है स्टिल तो आई कैन से ओके मैं एक वैल्यू पास कर देती हूँ। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो लेट मी जस्ट नेम दीज कंस्ट्रक्टर्स समथिंग ताकि हम विल नॉट नेम वैल्यूज जो हमें प्रिंट करवानी है वो हम चेंज कर देते हैं। तो this will call the second constructor, this will call the first constructor और ये हमारा default constructor कॉल कर रहा होगा। राइट सो जब सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो वो ए और बी दोनों की वैल्यूज को सेट कर रहा है एंड जो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो जस्ट ए की वैल्यू सेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस होल थिंग दैट वी जस्ट डिड राइट नाउ, a constructor with no parameters, a constructor with one parameter, a constructor with two parameters. तो it's the same as the concept of function overloading जो हम करते हुए आ रहे हैं कि एक फंक्शन जिसका सेम नाम है बट डिफरेंट पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट तो यहाँ पर भी हम सेम काम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर है क्या, इट्स अ फंक्शन। ठीक है, अब या तो वो फंक्शन कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा हो या तो वो फंक्शन मल्टीपल चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने क्या अभी परफॉर्म की, दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सही है। वन मोर थिंग जो कि मैंने पहले कहा था कि मैं डिस्कस करूंगी एंड आई डिडंट वाज कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें तो क्या होगा। सो कैन एनीबडी सजेस्ट कि क्या होगा? आई वांट सम आंसर्स। यस प्राइवेट करते हैं तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, बट लाइक व्हाट डू वी मीन कि एक्सेस नहीं हो पाएगा? सो इन दिस कोड अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर प्राइवेट वाले एरिया में मूव कर दूँ तो क्या होगा? सो जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी मूव दिस। राइट मैंने इसको मूव कर दिया। सो नाउ व्हाट वुड हैपन? सो ये जो चीज़ मैंने लिखी है विल इट वर्क? Why do you think it won't work? राइट सो जस्ट रिमेंबर हम प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते। राइट तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेनेवर यू राइट दिस स्टेटमेंट वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए जाता है, बट नाउ हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है तो यू कांट एक्चुअली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट। अब वो हमें एक एरर दे रहा है। सो कह रहा है कि ए का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है दैट इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो सिंस इट्स प्राइवेट हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते। लेट्स कमेंट दिस आउट। would there be any problems with the code now? अग्री नहीं करें, मुझे बताएं प्रॉब्लम्स हैं कोड के साथ या नहीं। So will this run now? मिस अटेंडेंस ले लें। अभी नहीं, 50 पे।
Okay, so there's nothing wrong with this code since you guys don't want to answer. So अब कोई issue नहीं है. This should run. Wait, did I do something wrong? Let me see. Let me see. अच्छा, right. So object हमने remove कर दिया था obviously. Right. तो उसने ये वाला constructor call कर दिया. उसने ये वाला constructor call कर दिया. Now let's talk about another thing. So let's say मैं ये remove कर देती हूँ altogether. So yeah, so will this work now? So I need to look at comments as well. मुझे बताएं, will this run? So I don't have a private constructor anymore. All my constructors are public. हमारा default object create होगा. I need answers. साद से नहीं पूछे, आप बताएं. Okay, so the answer is actually ये run नहीं होगा. And the problem is, okay, so yeah, so you can see a lot of errors तो क्या पर show कर रहा है ये. But हम error को read करते हैं and let's try to understand कि वो error क्या कह रहा है. So I'll paste the error in your chart ताकि आप लोग देख सकें. She's an error. Do you want to ask something? Okay, yeah. So default object के ऊपर ही error आ रहा है. So line number 33 पे वो error दे रहा है. So ये line number 33 is my object वाली statement. तो ये चीज़ वो अभी नहीं कर पा रहा. And वो मुझे क्या कह रहा है कि main के अंदर जो आपने ये statement लिखी है a object के नाम से, so वो कह रहा है कि there is no matching function call to the default constructor. तो default constructor हमने यहाँ पर बनाया हुआ नहीं है, right? सही है. तो the thing is कि अगर हम सारे के सारे constructors remove कर दें, so if I remove this, I'll need to comment these out first. चलो मैं इनको remove कर देती हूँ. So if I remove this, compiler एक default constructor provide करता है. There is nothing wrong with this. But अगर हम कोई भी parameterized constructor add कर देते हैं, so like in this case दो हमने add किए हुए हैं, तो now compiler has an issue with it. वो कहता है कि हमने अब कोई parameterized constructor provide कर दिए, तो I am not going to provide a default constructor anymore. नाराज हो जाता है compiler. ठीक है, तो so in this case आपको खुद से अपना default constructor provide करना होगा. So let's just make a default constructor ourselves. So this should resolve the issue. And इस चीज़ को मैंने इसलिए discuss किया है because when I was teaching OOP lab, like I don't know 1 or 2 years ago, so this is an issue that people run into a lot of times. कि वो default constructor नहीं create करते and then they're like object नहीं बन रहा मेरा. तो yeah, so if you see any error that says something like कि matching function call नहीं है for the default constructor, that means आपने खुद से बनाना है and you forgot to make it and आपने parameterized constructors create किए हुए थे. तो just make sure कि आप अपने parameterized constructors
अगर बना रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करें. So if there is no parameterized constructor तो कोई इशू नहीं है. सही है. So if I comment these out ताकि हम देख लें. So object 2 हमने create नहीं किया. And so if I remove all of my constructors कोई इशू नहीं है. वो एक object create कर देगा. Compiler in this case provide करेगा default constructor. ठीक है. तो अच्छा, सो रिमेंबर ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो ये ज़ीरो वैल्यू दिखा रहा है, बट ज़ीरो नहीं होगी आपके पास, तो शो रही होगी. ठीक है. बट अगर हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर खुद से प्रोवाइड किया है तो कंपाइलर डज हैव इश्यूज, वो डिफ़ॉल्ट नहीं प्रोवाइड करता. राइट. सो इन दिस केस वो डिफ़ॉल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, हमें खुद से प्रोवाइड करना होगा. So I need this in order to make that statement run. ठीक है. In this case I need to provide it. So इसके अंदर भी हमने कोई वैल्यू सेट नहीं करवाई भी, बट वो जीरो सेट करके दे रहा है आपको. सही है. Let me see if there's any other things जो कि मुझे आपको बतानी है इसके अंदर से. Right. So हमने constructor over. I showed you multiple constructors as well. या हमने ये करके देख लिया. ओके. सो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की बात नहीं की, बट वी विल टॉक अबाउट देम, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर्स आर समथिंग, वो उस वक्त कॉल होते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं विद द वैल्यूज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. तो लेट्स हैव अ लुक. अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ, सो इफ आई हैव ए ऑब्जेक्ट 2 एंड मैं चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज हो जाए. सो इफ आई राइट दैट ओवर हियर, ठीक है. सो इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, अभी ये नहीं चलेगा, बट आई नीड टू राइट अ कंस्ट्रक्टर जो कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा हो. सो लाइक दिस, बट यहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा होगा. सो किस टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा होगा? ए टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा होगा. तो दैट would be your copy constructor, जो कि हम next class में discuss कर लेंगे along with some activity probably. So obviously since हमारी classes online हो रही हैं, so I won't take the quiz this week, next week quiz लेंगे. ठीक है. So for your attendance, what I want you to do is I'm drawing a line over here. इसके बाद कुछ और नहीं लिखिएगा, just your roll numbers. Okay, so write your roll numbers after this. Nothing else, please. Muhammad Abdullah, do you have a question? आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं if you have a question. No participation weightage. I said कि please don't type anything other than your roll number. किस मुझे कॉफी वेस्ट करना है बाद में. So I am assuming सबने लिख लिया.
Okay, so last few minutes for any questions you might have. Okay, and was it self-explanatory? Like, I don't think constructors काफी मुश्किल हैं. Just remember कि कब कहाँ पर आपको खुद से प्रोवाइड करना है कंस्ट्रक्टर एंड कब नहीं प्रोवाइड करना. Okay, so if that is all, I think अगर सबने अपनी attendances mark करनी है, तो I'll be copying this to a notepad and keeping this. Okay. अच्छा, and I'll upload this later, ताकि if there's anybody who missed it, वो उसको देख लें. ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़. It's fine.